Let's start today's current affairs of 5th October. First news is Prime Minister Narendra Modi addressed an international webinar on textile traditions organized by ICCR. This seminar was conducted by ICCR. ICCR is Indian Council for Cultural Relations and UP Institute of Design. Both organized the webinar on the theme weaving relations and textile traditions. Weaving relations and textile traditions. This was the theme of the seminar, and in the context of Gandhiji's 150th birth anniversary, PM said that textile sector is the key to self-reliant India. ICCR was founded in 1950 by Maulana Abul Kalam Azad. Next news is India Bangladesh coordinated patrol कॉरपैट इज इन बे ऑफ बंगाल. बे ऑफ बंगाल में इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल एक्सरसाइज कंडक्ट हुई है. दिस इज कॉल्ड एज कॉरपैट. इट वाज द थर्ड एडिशन. It was the third edition of Corpat, follows the bilateral naval exercise Bongo Sagar between India and Bangladesh. ये भी conduct हुई है, which was held in northern Bay of Bengal. ये नेवल एक्सरसाइज थी. एक्सरसाइज अपहोल्ड्स विजन ऑफ सागर इज सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन. एडमिरल करमबीर सिंह इज द करंट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ. नेक्स्ट न्यूज इज विष्णु शिवराज पांडियन विंस गोल्ड इन 10 मीटर एयर राइफल. 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में विष्णु शिवराज पांडियन ने गोल्ड जीता है. इन इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैम्पियनशिप 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में विष्णु शिवराज पांडियन ने गोल्ड जीता है. इट वाज द 5th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैम्पियनशिप. सेकंड प्लेस पे रहे हैं वर्ल्ड नंबर 27 एटेन जैमाउंड ऑफ फ्रांस एंड और दूसरे मार्टिन स्टैम्फल रहे हैं ऑस्ट्रिया के थर्ड प्लेस पे. स्टैटिक फैक्ट्स है. इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन हेडक्वार्टर्स इज इन ब्रुसेल्स बेल्जियम. नेक्स्ट न्यूज इज इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स न्यू वर्जन ऑफ न्यूक्लियर केपेबल शौर्य मिसाइल का नया वर्जन इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है. ओडिशा इज द ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा which can strike against at around 800 kilometers. India also successfully test fired the BrahMos supersonic cruise missile. Static facts है. Shaurya missile moves at hypersonic speeds. Next news is Embassy of India in Kathmandu today embarked 56th anniversary of the Indian Technical Economic and Cooperation Day. Indian Technical and Economic Cooperation Day की 56th एनिवर्सरी हुई है इंडियन एम्बेसी की, जो कि काठमांडू में है. It was the 56th birth anniversary and it was conducted through a webinar on sharing knowledge and experiences on COVID-19 management. ITEC is the India's flagship capacity building assistance initiative. Static facts are Nepal capital is Kathmandu, currency is Nepalese rupee. Next news, ICICI Bank introduces कार्डलेस कैश विड्रॉल यूजिंग iMobile ऐप. iMobile ऐप यूज़ करके कार्डलेस कैश विड्रॉल इंट्रोड्यूस किया है ICICI बैंक के द्वारा. And the service is now available across 15,000 ICICI Bank ATMs across the country. Static fact is National Financial Switch is the largest network of shared ATMs. Next news is NASA lifts off SS Kalpana Chawla cargo spacecraft. A commercial cargo spacecraft bound for the International Space Station has been launched carrying the name of deceased NASA astronaut Kalpana K.C. Chawla, the first Indian-born woman to enter space for her key contributions to human space. She died with her 6 members on board Space Shuttle Columbia in 2003. Next news is government agrees to waive interest on interest. Government agrees to waive interest on loans up to rupees 2 crore during moratorium.
Center has informed the Supreme Court that it has decided to waive interest on loans of up to rupees 2 crore during the 6-month moratorium period, giving a big relief to retail and MSME borrowers. The expert committee on the issue, इसके लिए एक्सपर्ट कमेटी जिसने ये रिकमेंड किया था वो एक्सपर्ट कमेटी के हेड थे राजीव महर्षि. Next news is IIT Kharagpur launches telemedicine system iMedix फॉर कोरोना केयर. कोरोना केयर के लिए iMedix टेली मेडिसिन सिस्टम है IIT खड़गपुर का. IIT Kharagpur researchers have launched a telemedicine system iMedix to help patients receive assistance from doctors without having to go to hospitals or clinics. Technology basically integrates home care with healthcare services from the hospital. iMedix can be accessed by any standard internet browser. Next news is gross NPAs as a percentage of gross loans outstanding of RRBs marginally declined to 10.4% as on March 2020. Gross NPA as a percentage of gross loans outstanding of RRBs marginally declined to 10.4% as on March 2020 from 10.8% as on March 31, 2019. As per the paper published by the NABARD based on data on Insure Portal. इंश्योर पोर्टल के डेटा पे बेस्ड जो एक नाबार्ड ने पेपर पब्लिश किया है उसके अकॉर्डिंग लास्ट ईयर ये रेशियो जो ग्रॉस एनपीए एज अ परसेंटेज ऑफ ग्रॉस लोन्स ये जो रेशियो था वो 10.8% था 2019 में. इस साल ये 10.4% हो गया है. And 45 static fact is 45 RRBs are functioning in 685 districts of 26 states and 3 union territories. सर्वोदय से स्मॉल फाइनेंस बैंक ने फाइल किया है IPO पेपर्स सेबी के साथ. सर्वोदय स्मॉल फाइनेंस बैंक has filed draft papers with the capital markets watchdog SEBI to float an IPO initial public offering to utilize the net proceeds from the fresh issue towards augmenting its Tier 1 capital base to meet future capital requirements. IPO जब भी कोई कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट होने के लिए शेयर जारी करती है तो उसको वो IPO के थ्रू ही करती है. सर्वोदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर है नवी मुंबई में. नेक्स्ट न्यूज़ इज़ इंडिया एंड रशिया first ever India-Russia webinar on use of natural gas as a motor fuel organized. First ever India-Russia webinar on the use of natural gas as a motor vehicle was organized by Ministry of Petroleum and Natural Gas and Ministry of Energy of Russian Federation to assist in collective efforts to use natural gas as a fuel. Static fact is GAIL is the largest state-owned natural gas processing company. Thanks for watching the session.